that the chemical properties of acid. Okay, first one is reaction with amine. So acetic acid, that is RCOOH, react with amine to liberate hydrogen gas. So here we take 2 molecules of RCOH to give RCOONA plus H2. It is sodium acetate. Okay. Now we take here CH3COOH. For example, acetic acid react with Na to form 2 molecules of sodium acetate, that is CH3COONA plus H2. And when we have benzoic acid like C6H5COOH react with Na to form sodium benzoate C6H5COONA plus H2. Okay. Now the second reaction is reaction with NaOH. When RCOOH react with NaOH, okay, it is base, it is acid. So when acid and base react to each other, it gives salt and water. So what we obtain? RCOONA plus H2O. For example, when we take CH3COOH react with base, that is NaOH, it gives CH3COONA plus water, that is sodium acetate. And when we react C6H5COOH, that is benzoic acid, react with NaOH, it gives C6H5COONA plus water, that is sodium benzoate. Okay, it is sodium acetate, and it is sodium benzoate. Now these two reactions are done. Number 1 reaction with Na and number 2 reaction with NaOH. Now move to reaction number 3. Reaction with PCl5. Okay. Now when RCOOH react with PCl5, it gives acid chloride. Acid chloride is RCOOH के प्लेस में Cl आ जाएगा. Then POCl3, that is phosphorus oxychloride, and HCl. For example, when we take here CH3 C double bond OH, that is acetic acid, react with PCl5 to give CH3COCl, that is acyl chloride plus phosphorus oxychloride and HCl. Now, if we take C6H5COOH, that is benzoic acid, react with PCl5 to give C6H5COCl, that is benzoyl chloride. Its name is benzoyl chloride plus POCl3 plus HCl. Okay. Now move to number 4 reaction. Reaction with PCl3. सेम रिएक्शन है, यहाँ से भी आपको एसिड क्लोराइड ही ऑब्टेन होगा. फॉर एग्जांपल RCOOH, that is carboxylic acid, react with PCl3. So यहाँ पे आप 3 molecule of RCOH लेंगे, then it give 3 molecule of RCOCl, that is acid chloride,
Number 5, reaction with SOCl2, that is thionyl chloride. So when RCOOH reacts with SOCl2, that is thionyl chloride, it gives RCOCl, same as reaction जो हमको अपडेट हो रहा था, reaction with PCl5 and PCl3, यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट मिल रहा है, that is acid chloride plus SO2 plus HCl. Now when acetic acid, that is CH3COH, react with thionyl chloride, it gives CH3COCl plus SO2 plus HCl. And when benzoic acid, that is C6H5 COOH, react with thionyl chloride, that is SOCl2, it gives benzoic chloride, it is C6H5 COCl plus SO2 plus HCl. Okay. Now move to next chemical property, that is number 6, and it is reaction with ammonia. Reaction with ammonia. Now when RCOOH react with ammonia, it gives one additional unstable compound. क्या करना है कि NH3 को यहाँ पे ऐड कर देना. So what we get, RC double bond O ONH4. ये हुआ RC double bond O ONH4. Now it is going to be heated. When इसको हम heat करेंगे, removal of water हो जाएगा H2O. Then what we get, RC double bond O NH2, that is amide. So इस example लेते हैं, when acetic acid like CH3COOH react with ammonia, it gives CH3C double bond ONH4. After heating, removal of water takes place, and what we get, CH3C double bond ONH2, that is acetamide. Now when C6H5 COOH react with NH3, it gives C6H5 COONH4. After heating, removal of water takes place, and what we get, C6H5 CONH2, that is Benzoic. So this reaction is complete reaction with ammonia. Note down these two reactions and move to number next. Number next reaction is reaction with alcohol. Okay, number next is जो भी नंबर आप डाल लीजिएगा. Reaction with ROH. So when acid react with alcohol to form ester, and this reaction is known as esterification, and this reaction is carried out in the presence of acid as well as base. Okay, ये reaction हम लोग alcohol chapter में already पढ़ चुके हैं. Now what is this? Acid, that is RCOOH, reacts with alcohol ROH. These two are same as well as different. Okay, so here we take different R group, and what we get, this OH group is replaced with H when this reaction is carried out in the presence of H plus and base, acid as well as base. It gives RC double bond O
removal of water takes place when it is carried out in presence of acid या फिर base. It gives C6H5 CO OC2H5, that is ethyl benzoic. Its name is ethyl benzoate. Ethyl benzoate. Now, अभी आप लोगों ने देखा when एसिटिक एसिड लिया हम लोगों ने एंड जब इसका रिएक्शन हम लोगों ने PCl5 और PCl3 और SOCl2 से कराया, क्या मिला हमको RCOCl. जब इसका रिएक्शन हम लोगों ने अमोनिया से कराया, then what we get? We get RCOH2, that is amide. जब इसका रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल से कराया, so what we get? RC double bond OOR, that is ester. And these three are the derivatives of acid. Derivative मतलब ये is a bouquet of family और इससे ये members निकल के आ रहे हैं. So what are the acid derivatives? कौन से होते हैं acid derivatives? तो acid derivatives like acid halide, amide and ester. एक और बचा है स्टूडेंट, that is acid anhydride. उसका preparation इसके बाद करते हैं. Now reaction, next reaction is reaction with phosphorus, penta, oxide, and this reaction is also known as dehydration of alcohol. Okay. Number next reaction is reaction with phosphorus, penta oxide, and this reaction is also known as dehydration of acid. क्या करना है? Here we take two molecule of carboxylic acid, that is RCOOH, one more, that is RCOOH. React to each other in the presence of P2O5. After heating, removal of water takes place, and because P2O5 acts as a dehydrating agent here, so it absorbs that water. So क्या remove होगा? H2O. What we get? RC double bond O linked with this CO and R. So R C double bond O, R C double bond O connected with O, that is acid anhydride. Okay, its name is acid anhydride. Move to next reaction. Here we take two molecules of acetic acid, CH3COOH. Second molecule of acetic acid, CH3COOH. React to each other in the presence of P2O5 dehydrating agent. After heating, removal of water takes place, minus H2O. Here हम लिख लीजिए minus H2O, and what we get? CH3 C double bond O, CH3 C double bond O linked with O, that is acetic anhydride. Okay student, so यहाँ से आपको जो next जो remaining एक last बचा हुआ था derivative of acid, that is acetic anhydride, वो भी कर लिया. This reaction is known as dehydration of acid. Acetic acid important reaction है. Now move to number next chemical property. Number next reaction is reaction with Cl2 in the presence of red phosphorus and sunlight. Okay, reaction with Cl2, and this reaction is known as HVZ reaction. Okay, it is name reaction, that is Helmholtz-Zelensky reaction.
the presence of red phosphorus and also sunlight. Okay, when for example acetic acid, that is CH3COOH react with Cl2 in the presence of red phosphorus and H nu, hydrogen is substituted by Cl. But remember, what kind of hydrogen? Only alpha hydrogen. What is alpha hydrogen? CH3COOH. The functional group is taken as 0 and the next carbon connected with 0 is known as alpha carbon, and the hydrogen attached with alpha carbon is known as alpha hydrogen. So in acid there are 3 alpha hydrogens are here. So first of all, one alpha hydrogen is substituted by Cl to give HCl, and what we get here CH2, one Cl यहाँ पे placed हो जाएगा, and what we get COOH, alpha chloroacetic acid. Now number next is sunlight. Cl2 react with red phosphorus in the presence of sunlight. Same reaction takes place and the H is substituted by Cl. What we get CH, and here 2 Cl are attached with that alpha carbon, and COOH. Its name is alpha dichloroacetic acid. So one एक alpha hydrogen मिल रहा है, ये भी निकल जाएगा Cl2, red phosphorus, sunlight minus HCl, Cl3. Okay, the product is CCl3COOH, that is alpha trichloroacetic acid. Okay, student, I hope ये important reaction है, Hell-Volhard-Zielinski reaction. It means acetic acid reacts with Cl2 in the presence of sunlight. It is substitution kind of reaction. All the alpha hydrogen substituted by Cl as replaced as Cl, and Cl क्या होता जाएगा, attached हो जाएगा. Remember, when we take Br2 in the place of Cl2, only alpha derivatives are obtained. Okay, alpha bromoacetic acid is obtained, but Cl के साथ जब कराएंगे तो सारे alpha hydrogens आपके substitute हो जाएंगे with Cl के साथ. Now move to number next reaction. Number next reaction is reduction. Reduction of acetic acid. Acetic acid can be reduced by 2 kinds. दो इसके प्रकार हैं. Number 1 is partial reduction. Number 2 is complete reduction. When in partial reduction, acid reduced into alcohol, and in complete reduction, acid reduced into alkanes. Okay. For example, if we take here CH3COOH, it is reduced by LiAlH4, and it is partial reduction. So in partial reduction, it reduced into alcohol. So for the formation of alcohol, हमको यहाँ से 2O, यहाँ से ये ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, that यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, and this oxygen is replaced as water with 2 hydrogen. So total number of hydrogen कितने होंगे? 4 hydrogen, and these 4 hydrogen हमें कौन देगा? That LiH4, lithium aluminium hydride here act as a reducing agent. So what we get? CH3CH2OH plus 1 molecule of water. If we have अगर हमें इसको कराना है complete reduction, so CH3COOH plus complete reduction के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड लेना है in the presence of red phosphorus and heat कराना है, and in complete reduction acetic acid या acids are converted into alkanes. So alkanes बनाने के लिए OH हटाना है, and these ये ऑक्सीजन and ये ऑक्सीजन हटाना है in the form of water, और इधर कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन. ओके, सो हमको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? देखिए क्या बनाना
in the form of I2. So now for balancing the reaction we take here 6H and here we take 3I2. Now this is balanced reaction. It is known as complete reduction of acid and it is known as partial reduction of acid. In partial reduction, allyl H4 is act as a reducing agent. In complete reduction, red phosphorus with hydrogen iodide act as a reducing agent. In partial reduction, alcohols are formed. In complete reduction, alkanes are formed. Now move to aromatic type of reactions. For इसके लिए पढ़नी होगी हम लोग को benzoic acid के लिए, for example halogenation, nitration and sulfonation, because Friedel-Crafts alkylation and acylation does not given by as benzoic acid. Benzoic acid इतना रिंग को inactive कर देता है कि इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैच्ड नहीं हो पाता है, because benzoic acid is a metal directing group. It reduces the electron density at ortho and para position. So okay, the ring is too inactive for electrophile जो produced होते हैं जिससे Friedel-Crafts alkylation में और acylation में. So हमको यहाँ पे केवल 3 reactions पढ़नी है for benzoic acid के लिए, halogenation and sulfonation and nitration. Number one is first of all, benzoic acid is a metal directing group. As you can see here, now carbon have no number of electrons as well as carbon is attached with 2 oxygen. और जब डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो हम इसको मान के चलते हैं 3, ये 2 बार ऑक्सीजन से जुड़ा है, सो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गए. तो ये ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे हैं. सो ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा है, उल्टा इस रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की ओर ले रहा है. ओके, सो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमको डबल बॉन्ड सी ओ नेगेटिव OH, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव ये बॉन्ड और इस पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, माइनस प्लस बॉन्ड बन जाए. यहाँ पे पॉजिटिव ये बॉन्ड डबल बॉन्ड सी ओ पे नेगेटिव एंड OH. इस पॉजिटिव को देकर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा. देन व्हाट वी गेट, you can see here student, this COH group reduces the electron density at ortho and para position. So हमको ये क्या मिला, मेटा पोजीशन पे माइनस आर मिल रहा है बट एरो आ रहा है, एरो का हेड आ रहा है और हेड पे हमेशा नेगेटिव होता है. एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स इस पर रुके होंगे आगे मेटा पोजीशन पे. सो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ aromatic benzoic acid, फॉर एग्जांपल हैलोजेनेशन. In halogenation, COH reacts with Br2 in the presence of FeBr3. So because it is meta wave isomer, meta प्रोडक्ट देगा तो meta पे हम क्या लगाएंगे Br plus H2. It is meta bromo benzoic acid. What next is nitration. When benzoic acid react with concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, both are concentrated, to give nitro isomer at meta position. So give COOH and NO2 plus 1 molecule of water. It is meta nitro benzoic acid. Next one is sulfonation. Next is sulfonation. In sulfonation, benzoic acid react with H2SO4 concentrated in the presence of H2SO4 and it gives acid pH group and meta position. Plus H2. It is meta sulfobenzoic acid. So students, these all are the chemical properties
बेंजोइक एसिड। एमीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मैं आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एमीन पढ़ेंगे और अभी इसका हम लोग पढ़ने जाएंगे क्विक विनेगर प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इट इज द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, now students, let's start the industrial method of preparation for acetic acid and its name is quick vinegar process. In this method, one wooden tank is taken. एक लकड़ी का बॉक्स लेंगे like this and इसमें इस तरीके के स्लॉट्स बने रहते हैं, रैक्स बनी रहती हैं जिसमें से हम अल्कोहल की एंट्री करवाएंगे इस टैंक के अंदर। यहाँ पे आपका वुड स्क्रैप फिल करते रहते हैं। वुड स्क्रैप की लकड़ी की छील है एंड यहाँ नीचे साइड एयर अंदर जाने के लिए ट्यूयर्स लगे रहते हैं। It is wood scrap. Okay, यहाँ से हम CH3 CH2OH it means alcohol अंदर डालते हैं। अल्कोहल यहाँ पर भर देंगे एंड ये अल्कोहल जो है इस लकड़ी की छील अंदर वुड स्क्रैप को भिगोता है एंड this instrument is kept at 25 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर 15 to 16 डेज की जगह हम इसको एक अंधेरे कमरे में जहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो सके ऐसी जगह इसको हम स्टोर कर देते हैं। ओके, नाउ क्या होता है, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा एसिटी जो भीगी लकड़ी में प्रोड्यूस होता है इट ऑक्सीडाइजेस अल्कोहल इनटू एसिड। सो यहाँ से जो हमको ऑब्टेन होता है दैट इज एसिड एंड इट इज एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH and it is not very concentrated because कुछ रेस्ट अमाउंट यहाँ पे अल्कोहल का एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं बचा होगा। सो दिस प्रोसेस रिपीटेड इट सेवरल टाइम्स, बार बार इसको रिपीट करेंगे। सपोज स्टूडेंट यहाँ पर CH3COH हमको फर्स्ट टाइम में मिला एंड विच हैव 15% अल्कोहल एंड इस रिमेन बचा हुआ है अल्कोहल, इसमें बचा हुआ है रेस्ट अमाउंट इज एसिटिक एसिड। तो इस यहाँ से जो ऑब्टेन हुआ है मैंने इसको फिर से एंटर करा दिया। तो एसिटिक एसिड ऐसा वैसे ही पड़ा रहेगा बट जो अमाउंट उसमें अल्कोहल का है दैट इज अगेन ऑक्सीडाइज्ड बाय दैट बैक्टीरिया एंड वी गेट एसिटिक एसिड। नाउ फिर अगर कुछ बचा होगा द अमाउंट ऑफ अल्कोहल तो देन हम इसको रिपीट कराएंगे। तो ऐसे करने से जो एसिटिक एसिड में अल्कोहल का क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा और हमको एसिटिक एसिड मिलेगा। फिर इसका क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए इसको सोडियम NaOH के साथ क्रिस्टलाइन कराते हैं और जो हमको मिलता है रिजल्ट क्रिस्टलाइजेशन के बाद वो 100% प्योर एसिटिक एसिड होता है एंड 100% प्योर एसिटिक एसिड इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, सो यहाँ पे इसका एक प्रोसीजर है, क्या है, यहाँ से हमने अल्कोहल को एंट्री कराई। ये वुडन टैंक होता है जिसमें ये अल्कोहल आता है। अल्कोहल भिगाता है किसको, वुड स्क्रैप को। इट इज वुड स्क्रैप या रफ वुड स्क्रैप को भिगोता है भीगा और इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहां पे टेम्परेचर एक्सीड ना हो विद 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज हो जाता है तो ये बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देन ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है भीगी वुड में। दिस बैक्टीरिया इज जनरेटेड व्हिच इज ऑक्सीडाइजेस अल्कोहल इनटू एसिड एंड दिस प्रोसेस इज repeated at certain times to get the good concentrated acetic acid। और इसको निकालने के बाद इस प्रोसेस
as a result crystal of acetic acid is obtained, and which is 100% pure, and that 100% pure acetic acid is known as glacial acetic acid, and the reaction of this method is CH3 CH2OH. यहाँ से हम क्या पास करा रहे हैं, एयर, बिकॉज एयर की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन होगा. React with O2 in the presence of bacteria, that is Mycoderma aceti, to obtain CH3COH, that is acetic acid plus H2O. Okay students, so now this process is complete and alcohol, phenol, ether पूरा complete हो गया है, and this chapter which is aldehyde ketone and ACid ये भी complete हो गया है. Next method of operation of tanning कर चुके हैं. Next वीडियो में chemical properties of